To all of you, dear students, as we have discussed the chapter understanding secularism. So the Indian is secular country, and as we discussed what is the secularism and why it is important to separate religion from the state, because of the Indian is a secular country, and there is no one religion in the state, because of ki all there are many 7 or 8 religion in the country, and in the constitution we have an the state right that the कि वो किसी को भी क्या है किसी भी रिलीजन को वो एक स्टेट के रूप में उसे परमिटेड करें. ठीक है. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म. सो कि जो इंडियन की जो सेकुलरिज्म है व्हाट इज. सो वी विल discuss about this one topic. The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. So कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है बताया गया है कि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, एंड इट इज़ नॉट टू बी डोमिनेटेड बाय द ऑल अदर people to dominate the other religion, because of every person has to right to pray there or in faith their religion, so that one religious community does not dominate another, that some member do not dominate other member of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. So the state can't be say कि आप इसी रिलीजन को आप अपनाओ और इस रिलीजन को आप छोड़ो. तो दे हैव एन राइट टू से, और इट इज़ ओनली ऑफ द सिटीजन राइट टू व्हाट दे हैव. जो उनका रिलीजन है वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन में वो जा सकते हैं. ठीक है. सो इंडिया इसीलिए सेकुलर कंट्री है. ठीक है. अगर आप बिकॉज ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज यू कैन सी कि उसमें एक रिलीजन को जैसे जो अरब कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर अरब कंट्रीज में ये है कि एक ही रिलीजन को क्या है वहाँ पर परमिशन है. इट मीन्स इस्लाम और मुस्लिम रिलीजन. सो वहाँ ऐसा है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ देखो इंडिया इज अ डाइवर्सिटी एंड वी नो द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया. सो इसलिए हम लोग क्या हैं, सब एक हैं. अब देखो छोटे मोटी झगड़े क्वारल्स और समटाइम्स जो थॉट्स का जो गेम है वो कई बार ऐसा होता है, बट फिर भी क्या है कि इंडिया जो है वो सेकुलर है और हम सब एक हैं. वी हैव टू फॉलो द rules which is in constitution, and because of the humanity is a must. जो humanity है वो ही important है, not for a religion. The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. So जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी एक ही रिलीजन को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है, और ऐसा कर भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. तो वो किसी भी एक रिलीजन नहीं कर सकते. सो यू विल व्हेन यू विल रीड दिस वन स्टोरी, दिस इज़ द गवर्नमेंट हाई स्कूल. सो वो कहते हैं सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इज़ इन स्कूल, कैन वी डू इट इन दिस ईयर. सो when someone child were asking to his teacher that we because of religious festival है next month, so we have never celebrated in school, can we do it in this year. So I'm afraid. So what the teacher said, teacher will said, I'm afraid that isn't possible, Rekha. This is a government school, we cannot give
importance to any one religion, because of most of the time there is holiday to the religion festival. So because of key under the constitution all are equal, and all religion are equal to the basis of the कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम लोग क्या है कि एक ही रिलीजियस फेस्टिवल को क्या है कि स्कूल में हम लोग नहीं मना सकते हैं. एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग क्या है कि सभी रिलीजन को या तो मनाएं, या तो फिर मोस्टली क्या होता है कि उस टाइम पे हॉलीडे रहते हैं. सो इट इज़ कि इट इज़ अ बेस्ट आंसर बाय द टीचर, बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट टू बी एक्सेस दैट कि हम लोग क्या है कि उसको उस फेस्टिवल को क्या करें, सेलिब्रेट करें. ठीक है. आई नेवर थॉट ऑफ इट इज़ दैट दिस वे. आई गेस वी कैन always celebrate it outside the school. You can celebrate it outside of the school, because of it is your own personal life that no one can interfere your personal life. So anyway, we were planning to celebrate it in our locality. So it is our story that said कि बताती है कि every religion or religious festival should be equal to all of the students, and in a government school no one can right to उनको नहीं मना सकता है. और दूसरी बात, मनाए तो सभी सारे के सारे रिलीजियस फंक्शंस मनाने चाहिए. ठीक है. बिकॉज ऑफ इक्वलिटी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलरिज्म है. In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayer or through religious celebrations. So कि मॉर्निंग प्रेयर भी होती है, एंड दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स. ठीक है. प्राइवेट स्कूल वाले दे कैन बट वो भी ज़्यादातर नहीं करते हैं ऐसा. ठीक है. The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. So and this is important because of देखो कि जो रिलीजियस थिंग है उसको रोकने के लिए इंडिया में थर्ड जो इंटरफेरेंस है वो अनटचेबिलिटी और इन सब चीज़ों को क्या है कि बिकॉज ऑल आर इक्वल. सो इसलिए क्या है कि रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑल्सो. सो हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट. The law is in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? Don't worry, I will not be fined because of so someone said because he is a Sikh, and is the rule that they have to be right that they did not carry on the helmet on his head. And दूसरी बात की because for Sikhs wearing a pagri in a very important part of our religion, so it should be the government cannot force me to wear a helmet. So it is their religious things. So इसलिए इंडिया क्या है वो सेकुलर कंट्री है. ठीक है. यहाँ पर जो रूल हैं बट बिकॉज ऑफ ही इज अ सिक पर्सन, सो यहाँ पर उसके लिए रूल क्या है थोड़े से चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. ठीक है. बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं पगड़ी है जो अदर कड़ा है केस है, तो ये इनके क्या है रिलीजियस थिंग्स में आते हैं. इन द अबव स्टोरी बोल्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव अ वेयर ऑफ हेलमेट. दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वेयरिंग अ पगड़ी इन सेंट्रल टू Sikhs religious practice, and in order not to interfere with this allows an exception in the law. So there is a law, and it is an exception that the Sikh youth does not have a wear a helmet. So it is important that कि सभी के हैं ऑल आर इक्वल, बट वहाँ पर कुछ बहुत रिलीजियस प्रैक्टिसेस इट इज़ भी समटाइम्स उनको क्या है थोड़ा बहुत छूट मिली हुई है.
The third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier in through a strategy of intervention. So कि इंटरफेयर का जो तरीका है, ठीक है, यू डिड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी में हमने देखा है, ठीक है. दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ the same religion dominate other member, upper caste Hindus and some lower caste also within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. So Indian Constitution ने क्या किया, untouchability को क्या कर दिया, बैन कर दिया. And it is must to the सोसाइटी में आपको पता ही है कि untouchability सही नहीं है, because if we are belongs to the some of the lower caste, so called the lower caste society or lower caste thing, तो हम लोगों को भी क्या है, we could not feel better. So कि it is important, and the Indian Constitution banned untouchability. So in this stance, the state in intervening in religious in order to end a social practice that is believer discriminates and excludes, and that violates the fundamental right of lower caste. So अगर lower caste के fundamental rights में violate हो रहे हैं तो it not be good because of untouchability का rule भी बन गया है. और अभी भी, क्योंकि देखो ये rule बने ना बने, it is not matter, but कि in a 21st century we are still here, so we should think that we have not to unequal for every person, ठीक है. और उसकी कास्ट से, उसके रिलीजन से अगर हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी से, तो इट नॉट बी गुड, ठीक है, फॉर ह्यूमनिटी basis. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of community. So कि ये कभी कभी स्टेट्स में क्या होता है कि इसी तरह जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उसके बराबर हिस्से का जो अधिकार का रिस्पेक्ट करने के लिए राज्य को जो है कि स्टेट्स को जो है कि वो कम्युनिटी के और रिलीजन पर अकॉर्डिंग टू रिलीजन उनको समटाइम्स दे हैव पर्सनल लॉज जो हैं उन पे इंटरवेंशन करना पड़ता है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और you will see this one and study the story board, that you will find कि किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में अनइक्वलिटी है, और इक्वलिटी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में और गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या करती है. ठीक है, हैव अ गुड डे.